Good morning, students. So, today we are going to continue our discussion on health and diseases. So, children, as we have already discussed about the different types of diseases, as we have discussed that there are two categories of disease, like the congenital disease and the acquired disease. In our last video, we have discussed the two important categories, that is congenital disease and acquired disease. So, children, acquired disease are further categorized into two groups: communicative disease, that is infectious disease, and non-infectious disease. There is a further division of infectious disease, that is contagious disease and non-contagious disease, and further classification of non-infectious disease is degenerative or organic disease, deficiency disease, allergies, and cancer. So children, this is the overall types of diseases. This is the overall classification of disease, right? So there are different categories, there are different types of diseases, right? So we will start our discussion with the infectious disease. So children, talking about the infectious disease, so infectious disease can be transferred from an infected person to a healthy person by several means, right? Therefore they are called infectious disease, and therefore these infectious diseases are also called communicable diseases. These are called communicable diseases because these diseases are spread from the infected person to the other person, right? And they are communicated from one person to other person. So that is why they are termed as communicable diseases. So children, as we know that these diseases are spread from infected person to other person in various ways. They can spread through the air, they can spread through the water, food, physical contact, sexual contact, through the insect, right? And children, the causative agent of these diseases are called pathogen. So these diseases are caused due to the infection spread by the microbes, right? Like bacteria, fungi, virus, and those pathogen are called as causative agent, right? तो ये जो causative agent होते हैं, infectious disease के जो causative agent होते हैं वो पैथोजन कहलाते हैं. पैथोजन क्या? Disease causing microorganism. Got it? For example, children, like this is the complete chart for the each category of pathogen. So broadly we have 5 important categories like bacteria, virus, protozoa, fungi, worms, right? So talking about the example, so typhoid, cholera, tuberculosis, they are caused by bacteria. Chickenpox, AIDS, dengue, fever, so they are caused by virus. Malaria, Kala Azar, they are caused by protozoa. Many skin diseases, many skin infections, they are caused by fungi. Teniasis, Ascariasis, Elephantiasis, they are caused by worm, right? So these are the different diseases which are spread by microbes. Now talking about another important category, that is non-infectious disease. So children, non-infectious disease, so these diseases remain confined to the person who developed them and do not spread to other person, right? तो ये जो disease होते हैं that are caused by the mean of other than microbes, right? So that is why they are termed as non-infectious disease, and basically they are confined to the person who developed those disease. जिस भी person में, जिस भी patient में ये disease होता है वो वहीं तक confined रहता है. एक infected person से healthy person में spread out नहीं होते ये diseases. So that is why they are termed as non-infectious disease. And children, basically these category of disease is mainly caused by internal means like the personal hygiene, environmental factor, etc., right? And talking about the example of such kind of disease is cancer, diabetes, heart disease, stroke, chronic lung disease. So these diseases are the non-infectious disease. And children, as they are not caused by microbes, they are not caused by pathogens, therefore they are not spread from the infected person to the healthy person.
by any kind of mean. So that is why they are termed as non-communicable diseases, because they are not communicated from the affected person to the healthy person, right? So that is why they are termed as non-communicable diseases or non-infectious disease. So let us discuss more about non-infectious disease. Now children, these non-infectious disease may be occur due to the malfunctioning of some important body organs, like the improper functioning of body parts, like heart disease, epilepsy. अगर बॉडी का कोई भी ऑर्गन प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो वो डिजीज हो जाता है उससे, राइट? लेकिन जो डिजीज होता है वो कैसा डिजीज होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। लेट अस सपोज कि अगर किसी पर्सन ए को हार्ट डिजीज है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ए के कांटेक्ट में बी आता है तो बी को भी हार्ट डिजीज हो जाएगा, राइट? ऐसा नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्यों होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल में भी डिजीज अकर्स में बी ड्यू टू द माल फंक्शनिंग और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट, राइट? द सेकेंड रीजन इज द inadequate diet, right? So if there is the inadequate diet, not proper diet, if any person do not take the balanced diet, right, तो डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, तो वो लीड करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज को, राइट? हाइपो और हाइपर सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन। किसी भी पर्सन में अगर किसी हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो या कम हो तो उससे डिजीज़ हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी एक पर्सन को हाइपो और हाइपर सिक्रीशन के डिजीज़ हैं, लाइक अगर किसी एक पर्सन को लेट अस सपोज कि अगर राम को हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड है, राइट? तो अगर राम शाम को टच करता है तो शाम को भी थायराइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट? सो इट रिमेन कन्फाइंड टू दैट पर्सन ओनली, राइट? द नेक्स्ट इज द माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम, राइट? अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता तो वो भी डिजीज़ को लीड करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी एक पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक है तो वो किसी दूसरे को टच करेगा तो दूसरे को भी इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, राइट? सो दैट काइंड ऑफ डिजीज रिमेन कन्फाइंड टू दैट पर्सन ओनली, राइट? इट इज़ नॉट स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। और उसके रीजन्स क्या हो सकते हैं? रीज़न हो सकते हैं, द रीज़न बिहाइंड आर improper functioning of body part, inadequate diet, hypo or hypersecretion of hormones, and improper functioning of body's immune system, right? So because of this reason non-infectious disease occurs in the body, right? अच्छा, यहाँ पे हमने बात करी है inadequate diet यानी कि डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में, कि अगर किसी भी चीज़ की बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो वो लीड करता है डिजीज़ को। And children, here on your screen is a chart for the deficiency of vitamins or some important elements, right? Deficiency disease caused due to the deficiency of vitamin A, right? So the deficiency is loss of vision, जिसे हम color blindness कहते हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाले डिजीज़ बेरी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ स्कर्वी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली रिकेट्स, विटामिन कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़ बोन एंड टूथ डिके, आयोडीन की कमी से होने वाले डिजीज़ गोइटर, आयरन की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़ एनीमिया, right? And the symptoms are also written on your screen, right? So this is the chart for the some of the deficiency disease. तो इसी तरीके का एक चार्ट आप अपनी नोटबुक में भी बनाएंगे जिसमें सारे विटामिन आप इंक्लूड करेंगे और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे, right? Now children, let us talk about the means of transmission of communicable disease. Here we are going to talk about means of spread of communicable disease, like how the infectious disease are communicated from infected person to healthy person. Like children, as we all know that infectious disease are also called as communicable disease because they can spread from infected person to healthy person, right? So the infectious disease are transmitted from infected person to healthy person by two means, direct contact or indirect contact, right? So the means of spread of these diseases are different to different pathogens, right?
So there are two modes of transmission, that is direct transmission and indirect transmission. Talking about the direct transmission, the disease causing microorganism, that is the pathogen, जो microorganism disease cause करता है उसको हम क्या कहते हैं? पैथोजन. So the pathogen are transmitted from infected person to healthy person directly, right? If there is the direct contact between two persons, between the healthy person and healthy infected person, if there is the direct contact, so the pathogen is transmitted directly into the healthy person, right? तो किस तरीके से direct transmission होता है? The very first one is the physical contact with the infected person, right? So children, the pathogen of disease, like talking about the measles, chickenpox, smallpox, so the pathogen are spread through the physical contact with the infected person, through the articles of use, right? So such disease are termed as contagious disease. तो अगर disease का spread direct contact के through हो रहा है तो pathogen is directly transmitted from infected person to healthy person, right? क्योंकि इसमें physical touch से पैथोजन स्प्रेड होता है, इसलिए हम इन डिजीज को कॉन्टेजियस डिजीज भी कहते हैं, राइट? नाउ द सेकेंड वे इज द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. चिल्ड्रन, सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज सच एज सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, they are transmitted by the sexual contact from one partner to the other partner, right? And the microorganism responsible for causing these disease, children, however, do not spread by casual physical contact such as handshake or hug, right? So social contact से disease नहीं फैलते. These disease are spread from infected person to healthy person through the sexual contacts, right? उसी के साथ साथ they are also spread in the society through the blood transfusion from infected person. अगर कोई एक person जिसे एड्स है, अगर उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी हेल्दी पर्सन में हो जाए तो उस हेल्दी पर्सन को भी एड्स हो जाएगा, राइट? यूज़ ऑफ कॉमन निडल्स एंड सीरिंज, अगर किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन की यूज्ड सीरिंज से हम दूसरे को इंजेक्ट करते हैं तो हेल्दी पर्सन में भी डिजीज़ हो सकता है, राइट? So through the sexual contact, some diseases are spread by direct means, right? So this is a category of direct transmission. The next is contact with soil. Children, many pathogen can enter the human body through the soil, through the injury, right? Just as shown in the picture. इस पिक्चर में दिख रहा है कि किसी के पैर में चोट लगी है, इंजरी हुई है, और अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है सॉइल के तो थ्रू द सॉइल द पैथोजन डायरेक्टली एंटर टू द पेशेंट बॉडी, टू द पर्सन्स बॉडी, राइट? सो कॉन्टैक्ट विथ सॉइल इज अ कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन. द नेक्स्ट वन इज द एनिमल बाइट. Children, infectious disease, or we can say communicable disease, can also spread through the animal bite. एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं रेबीज वायरस, राइट? So rabies virus enter the human body by the bite of rabid dog, monkey, right? So that will cause the rabies. अगर rabid dog या rabid monkey है तो अगर वो एनिमल बाइट करते हैं किसी हेल्दी पर्सन को तो हेल्दी पर्सन को भी रेबीज हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे सारे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, right? So these are the categories of direct transmission. Now let us talk about the indirect transmission. Children, indirect transmission involves spread of pathogen of some disease through some intermediate agent, right? तो जहाँ पे किसी भी डिजीज के पैथोजन ट्रांसमिट होते हैं हेल्दी पर्सन में पर किसी मीडियम के थ्रू, राइट? इंटरमीडिएट एजेंट के थ्रू, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. जैसे कि द फर्स्ट कैटेगरी इज थ्रू एयर, लाइक इन्फेक्शियस माइक्रोब दैट कॉज कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, राइट? दे कैन स्प्रेड थ्रू एयर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन. Like the infected person throw out little droplets on sneezing or coughing, and someone is standing close by can breathe in these droplets.
in that way the microbes get chance to enter or to start the infection to the healthy person, right? तो इस तरीके के जो disease होते हैं वो airborne disease कहलाते हैं because they are spread by the mean of air, right? The next one is through the contaminated food and water. कई तरीके के infectious disease जो होते हैं they can spread through the intake of contaminated food and water, right? जैसे कि for example cholera causing microorganism, they enter into the new host through the contaminated water. If the healthy person drinks the contaminated water or eat the contaminated food, the pathogen enters into the healthy person and lead the disease, right? So in that way the disease is spread through the contaminated food or contaminated water. The next category is through the vector. Vector क्या है? Like children, many of the living organisms carry infecting agents, right? Carry infecting agents from the infected person, right? जैसे कि such kind of intermediate animals or such kind of intermediate organism are termed as vector. तो कुछ ऐसे organisms होते हैं जो पैथोजन को कैरी करते हैं स्प्रेड करने के लिए, राइट? तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? वेक्टर, राइट? सो द वेक्टर आर देयरफॉर द कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग पैथोजन, राइट? एंड द मोस्ट कॉमन वेक्टर इज इंसेक्ट, जैसे कि मॉस्किटो. मॉस्किटो क्या है? टॉकिंग अबाउट द मलेरिया, राइट? तो मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट जो वेक्टर होता है, मलेरिया का वेक्टर क्या है? मॉस्किटो. और मॉस्किटो का क्या इंपॉर्टेंट काम होता है? कीटो होता है वो पैथोजन को कैरी करता है, राइट? एंड व्हेन दैट मॉस्किटो बाइट टू द हेल्दी पर्सन, तो क्या करता है? दैट पैथोजन इज ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी पर्सन, और तब हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे मॉस्किटो ने क्या काम किया? यहाँ पे मॉस्किटो ने पैथोजन के कैरियर का काम किया. तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? वेक्टर्स. और पैथोजन क्या कहलाया? कॉजेटिव एजेंट. तो यहाँ पे बच्चों दो टर्म्स हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है. पहली इंपॉर्टेंट टर्म है वेक्टर. वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैथोजन को कैरी करते हैं, एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देते हैं. जैसे कि मॉस्किटो या हाउस फ्लाई, किसी इन्फेक्टेड पर्सन पे बैठा मॉस्किटो और उसको बाइट किया, तो अब पैथोजन कहाँ आ गए? मॉस्किटो में आ गए. और जब उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो वो पैथोजन कहाँ ट्रांसमिट हो जाएंगे? हेल्दी पर्सन में. तो हेल्दी पर्सन को डिजीज हो जाएगा. तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? वेक्टर्स. और जो पैथोजन है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या कहलाएगा? कॉजेटिव एजेंट, राइट? नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज द फोमाइट बॉर्न. फोमाइट बॉर्न क्या होता है? लाइक द आर्टिकल्स कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन also become the source of infection to the healthy person, right? So that kind of disease is known as fomite borne disease. जैसे कि डोर के हैंडल हैं, टैप्स हैं, यूटेंसिल हैं, गारमेंट्स हैं, करेंसी है, अगर ये सब चीज़ें, ये सब आर्टिकल्स किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आया, ठीक है, और इन्हीं आर्टिकल्स को किसी दूसरे ने भी टच कर लिया और उसे भी ये डिजीज़ हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? फोमाइट बॉर्न डिजीज, राइट? So this is about the transmission of disease. So we have discussed about the two categories of transmission, direct transmission or indirect transmission. In direct transmission we have studied when there is the direct contact, direct physical contact between healthy person and infected person, the disease is spread. And in the indirect transmission we have seen that the disease is spread from infected person to the healthy person through the intermediate agent, right? What are those agents? Air, food, water, vector and articles, right? And this is the complete chart which actually shows the direct transmission and indirect transmission. So in that chart you can see that infected person handshakes with the healthy person and the disease transmitted, right? When the healthy person use the articles of infected person, the disease transmitted, right? When there is the contamination or unhygienic food का use होता है, the disease transmitted. The disease is also transmitted by the animal bite, right? So we have discussed about both
both the categories through the direct contact or through the indirect contact. So this is the complete chart which actually shows the transmission, the mode of transmission, right? So children, I hope that whatever we have discussed you understand. Still you feel any kind of doubt, any kind of query, so just feel free to ask. In the next video we will discuss more about the health and diseases. Till then, have a nice day and thank you.